So in this numerical, we can see that, what can we see? So just erase all this. Yeah. So in a screening test done on 1000 people, 90 were found to be positive. So a screening test was put on 1000 people, 90 were found to be positive. So जो positive आया है, and using gold standard test out of 1000, 100 were found to be positive. So I don't think you need a 2x2 table for that. I just drew it, but it's very straightforward. So 90 people are true positives, okay, and the total people who are diseased is 100 according to the gold standard, right? So we know that sensitivity is equal to true positive upon whole of disease positive, which is 90 upon 100, which can be 90% or 0.9, right? So this is how you calculate sensitivity of a particular test. Now, if you are still confused, I'll repeat it for you. So it was done, screening test was done on 1000 people, okay, and 90 were found to be positive, which is what? The true positive. And on using gold standard test out of 1000, 100 were found to be positive. अब gold standard का मतलब ये होता है कि it is correct, like the results will be correct. अगर 100 positive हैं तो वो 100 के 100 क्या होंगे? Diseased होंगे. वो सारा का सारा diseased population को filter out करता है एक golden standard test. Okay, like we just talked about in the previous slide. Here we studied कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग जो डिजीज़ प्रेजेंट होता है उसको फाइनल माना जाता है. सो आउट ऑफ द 1000 पॉपुलेशन 100 वर एक्चुअली पॉजिटिव, बट अकॉर्डिंग टू स्क्रीनिंग टेस्ट 90 वर ट्रू पॉजिटिव. इसलिए डिजीज़ पॉजिटिव के ऊपर ट्रू पॉजिटिव लगा के वी कैन गेट 90%. सो द नेक्स्ट concept is specificity. Okay, so what is specificity? Specificity is the ability of a screening test to identify correctly all those who do not have the disease. यानी कि the specificity of a screening test tells you, or basically it identifies all those who don't have the disease, have disease. Okay, so they are correctly identifying all those who don't have the disease. So the formula for specificity is it is actually true negatives upon true negatives plus false positives into 100. So this is the formula for specificity. So ये बताता है कि true negatives upon true negatives plus false positives. So what trick you can use is, sensitivity में n आता है तो उसका just opposite होगा on the S के बाद T आता है ना, और N का opposite P ऐसे लगा दो, and नीचे TP and इसका opposite क्या होगा? FN है ना, टू का opposite false, P का opposite N, ऐसे करके you can remember. Same for specificity. तो S के बाद आता है T, P का opposite क्या है? N, और TN plus FP. So this is how you remember the formula. Okay. After specificity, we have other parameters that we calculate. That is PPV, which is positive predictive value. Okay. Now, what is positive predictive value? Positive predictive value is the ability of a screening test to identify correctly. Identify what? Identify correctly. Identify correctly all those who have the disease out of all those who test positive on a screening test. यानी कि एक screening test का result कितना positive हो सकता है वो positive predictive value होता है. यानी कि true positives upon total positives. Okay, that is positive predictive value. यानी कि कितना true positive होगा out of all the positives. So true positive out of all the positive on the screening test is true positive plus false positive. This is what positive predictive value. You understood? This is positive predictive value. Next you have negative predictive value, which is just the opposite of that, which is the ability to identify
all the true negatives out of the total negatives. So true negative upon the total negative, which is true negative plus false negative. So this is the negative predictive value. Okay, now percentages of false positives, वो कैसे निकालते हैं? Percentage of false positives is equal to false positive upon false positive plus true negative into 100. इसको हम ये डिनोमिनेटर देख रहे हो, आपने कुछ देखा? ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस व्हाट? SP, specificity. Okay, so 1 minus specificity is equal to percentage of false positives. क्योंकि अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो 1 माइनस स्पेसिफिसिटी क्या होता है? ट्रू नेगेटिव अपॉन ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, एंड इसको अगर हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो इट विल कम आउट टू बी ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव माइनस ट्रू नेगेटिव अपॉन ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, which is equal to true नेगेटिव, और ये ट्रू नेगेटिव कट जाएगा तो बच जाएगा फॉल्स पॉजिटिव अपॉन ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव. सो यू कैन रिमेंबर फॉल्स पॉजिटिविटी, फॉल्स पॉजिटिव परसेंटेज is equal to 1 minus specificity. Okay, and similarly false negative percentage is equal to 1 minus sensitivity. So it's very simple. False positive में P आता है तो you can remember like that, and इसमें N आता है तो you can remember like that. Okay, derivation तो सब ठीक है, but you also need to remember. So for remembering we use these acronyms or mnemonics. Okay, so we're done with all the formulas regarding the 2x2 table. So we'll try to solve this question. So here it's saying 5,000 people underwent screening for a disease. So they underwent what? So 5,000 people underwent screening for a disease. Out of 500 diseased, 350 reported true positive, and out of 4,500 healthy, 3,000 reported true negative. Okay, so let's just write down all the values. So first of all we'll make the 2x2 table. The 2x2 table में the trick I told you, D on one end and R on the other end. Okay, so D positive, D negative, R positive, R negative, and we can construct this table. It's very simple. Yeah, so yes, so out of the 500 disease 350 reported true positive, यानी कि यहाँ पे 350 आएगा, राइट? 350 यहाँ पे आ गया. They were true positives. तो बच्चे कितने आउट ऑफ 500? तो 150, राइट? सो डिजीज टोटल कितने डिजीज थे? डी पॉजिटिव. डी पॉजिटिव इज 500, यहाँ पर 500 आ जाएगा. आउट ऑफ 4,500 हेल्दी, यानी कि हेल्दी मतलब डी नेगेटिव. 4,500 यानी कि डी नेगेटिव, जिनको कोई डिजीज़ नहीं है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट्स. ओके, तो इसमें से 3,000 और ट्रू नेगेटिव, यानी कि 3,000 यहाँ पे ये ट्रू नेगेटिव है. बच्चे 1,500 क्या है? फॉल्स नेगेटिव ऑब्वियसली, है ना? तो हमने ये 2x2 टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया. अब वो पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट. सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट द सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी इज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव्स अपॉन ट्रू पॉजिटिव्स प्लस फॉल्स नेगेटिव्स, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज ट्रू पॉजिटिव्स अपॉन डिजीज पॉजिटिव. ओके, तो इसमें ट्रू पॉजिटिव्स कितना आया? 350, और टोटल डिजीज कितने थे? 500, तो नीचे 500 हो जाएगा इंटू 100, राइट? तो ये कितना आएगा? 70%. ओके, एंड SP यानी कि स्पेसिफिसिटी कितना है? ट्रू नेगेटिव्स अपॉन ट्रू नेगेटिव्स प्लस फॉल्स पॉजिटिव्स. तो ट्रू नेगेटिव
कितना है, ट्रू नेगेटिव है 3000, 3000 अपॉन 3000 प्लस फॉल्स पॉजिटिव, यानी कि वो पॉजिटिव है बट फॉल्सली पॉजिटिव है, तो 1500। ओके, तो ये आ जाएगा 3000 अपॉन 4500, है ना। तो 4500 इंटू 100, तो कितना आएगा, 5 9 ज़ा 5 6 ज़ा 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, तो अबाउट 66% आ जाएगा। तो 66%, तो हमारा एस पी कितना आया, एस पी इज़ 66% and SN is 70%. So let's look at the options. Which one is correct? SN is 70%. Yes, this is correct. Specificity, no, it's 66%. Sensitivity is 70%. Specificity. Correct answer क्या आ जाएगा इसमें? Correct answer is